welcome to my channel. Today we will learn about properties of water. Water is shapeless. Water को हम लोग जिस शेप में डालते हैं वो वही शेप बना लेता है। तो चलो देखते हैं। जैसे सर्कल वाला बाउल है, वाटर भी सर्कल वाला है। अब हम लोग ग्लास से पानी लेकर डालेंगे। हमने पानी को जिस शेप में डाला, पानी ने वही शेप ले लिया। Our next property of water is sink and float. Let's do it our activity. अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट पानी में डालकर देखेंगे ये फ्लोट होते हैं या सिंक। ये हुआ है सिंक और दो मार्बल हुए हैं सिंक। अब मैंने ये दो स्टोन डाले, ये डूब गए। अब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, देखते हैं ये फ्लोट होते हैं या फिर सिंक। ये हुआ है फ्लोट और ये हुआ है फ्लोट और ये हुआ है फ्लोट। Stone are insoluble in water. Water are insoluble in water. अब हम लोग वाटर में शुगर मिक्स करेंगे। Sugar is soluble in water. अब मैं salt मिक्स करूंगा वाटर में। Let's do the experiment. अब मैं वाटर में salt मिक्स करूंगा। Salt is also soluble in water. Next property of water is tasteless. अगर हम लोग उसमें वाटर में शुगर मिक्स करेंगे तो वो मीठा बन जाएगा और वाटर में सॉल्ट मिक्स करेंगे तो सॉल्टी बन जाएगा। So next property of water is colorless. I will show you how. अब मैंने इसमें पर्पल कलर मिलाया। तो मैंने पर्पल कलर मिलाया था ना, तो ये पुरानी पर्पल कलर